Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve 15th problem of final account intermediate first year accountancy. Problem शुरू करने से पहले प्रॉब्लम में एक एरर है. If you are observing the value of sales that is 15,500 in the question, अगर क्वेश्चन में आपको सेल्स की वैल्यू 15,500 दिख रही तो उसको करेक्ट करो. दैट इज नॉट 15,500, दैट इज 15,000. Now let us begin with our question. It is telling that from the following trial balance, prepare final account for the year ending 31/3/2015. In this statement, the name of the business is missing. Business का नाम नहीं दिया, तो हम भी business का नाम नहीं लिखते in our heading. So the heading of trading and profit and loss account will be trading and profit and loss account of Mrs. Dash for the year ending 31/3/2015. Now, if we are making an account, then it is mandatory to write DR and CR on both the sides. Now, let us begin with the credit side of trading account. The first item on the credit side of trading account will be sales, and the last item of trading account credit side is closing stock, right? So, before writing the value of sales, what we need to do? We need to search for sales return on the debit side. देखो डेबिट साइड एक रिटर्न्स दिख रहा हमको. दिस रिटर्न इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ सेल्स in the inner column on credit side of trading account. That will be 15,000, and from this 15,000 we need to subtract the value of sales return, that is 800. So the value of net sales will be 14,200, right? Now we have completed the first item, first credit item. The last credit item is closing stock. In our question, the closing stock is mentioned below the trial balance. So directly we'll move towards the credit side of trading account and write the value of closing stock, that is 3,000. From this, we have completed all the credit items of trading account. Now let us write the first item of trading account. Trading account में debit side पहला item रहता opening stock. So the value of opening stock is 7,100. Now we'll move towards the debit side and write 7,100 opening stock. Then after that, the second permanent item of trading account is purchases. That is 6,500. Before writing the value of purchases, we'll look for purchase return. That will always appear on the credit side of trial balance. Trial balance के credit side अगर return दिखी, that is always purchase return. So purchase return question में नहीं है. Directly we will write the amount of purchases in the outer column, that is 6,500. Done. The third permanent item of trading account is wages. Now let us look for wages. Wages is here below depreciation, that is 2,700, and this is the third permanent debit item of trading account, 2,700. Then after this, only we need to consider all trading expenses. Now what are trading expenses? All the expenses are related to goods when they are purchased. Goods जब आप खरीदते तो उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, और फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड अपीयर होता. नाउ लेट अस लुक फॉर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस. Purchases done, opening stock done, returns we have considered. Rent and taxes profit and loss account का आइटम है ये. Debtors is our asset. Salary is the first item of profit and loss account. Machinery is our asset. Motive power is the expenditure related to factory. So directly we'll move towards the debit side of trading account and we'll write motive power, that is 850. Then after that, insurance, depreciation, wages we have considered. Furniture is our asset. Drawings, this drawings must be subtracted, deducted from capital. Advertisement is expenses which is not related to goods and factory, तो advertisement को हम consider नहीं करते. So now we need to find gross profit. Gross profit है, gross loss है, मालूम करेंगे. For that we need to do the total of both the sides. जब आप दोनों का टोटल करेंगे तो we can see that the credit side total is more than the debit side, and that is 17,200. और ये 17,200 हम डेबिट साइड पे लिख देते, राइट?
From this 17,200 we need to subtract the total of debit. ये डेबिट साइड का टोटल जो हम करे थे वो टोटल को 17,200 से सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे क्या आता ग्रॉस प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 50 रुपीज. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखिए तो ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी. सो डायरेक्टली द ग्रॉस प्रॉफिट विल जंप फ्रॉम द डेबिट साइड एंड मूव टुवर्ड द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल. डन. अब ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखते कि इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता. सो लेट अस कंसीडर ऑल द क्रेडिट आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्रेडिट आइटम को सर्च करना है तो क्रेडिट साइड इट सर्च करना. लेट अस सी सेल्स, कैपिटल, बिल्स पेबल. सेल्स आपकी इनकम रिलेटेड टू गुड है, ये नहीं आता. कैपिटल इज अवर लाइबिलिटी, ये भी नहीं आता. बिल्स पेबल इज अवर लाइबिलिटी, ये भी नहीं आता इधर. इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अवर इनकम and it is non-trading income. All the non-trading income must be considered on the credit side of profit and loss account. Bank loan is our liability. So there is only one there is only one non-trading income, that is interest received. The amount is 2,650. What we need to do, we'll move towards the credit side of profit and loss account and we'll write interest received, that is 2,650. Then after this we'll move towards the debit side of profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड फर्स्ट आइटम हमेशा सैलरीज आता. तो लेट अस सी फॉर द सैलरीज, दैट इज 6,500. अब 6,500 को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे. देन आफ्टर दैट वी नीड टू राइट ऑल द नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है क्या, the expenses which are not related to goods when they are purchased and the expenses which are not related to factory, right? So let us see, rent and taxes 1,500. We need to write on the debit side of profit and loss account rent and taxes. Then after that insurance, that is 900. This expenditure is not related to goods and factory, so we are writing insurance on the debit side of profit and loss account, that is 900. Then after that depreciation is nothing but reduction in the value of asset. assets हमारे बिजनेस के हैं, हमारे बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू अगर कम हुई तो हमारे लिए लॉस है. तो हर लॉस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दे. So directly we'll move towards the debit side of profit and loss account and we will write depreciation, that is 700. Then after that advertisement. Advertisement is the expense which is not related to goods and factory, so it will come under the debit side of profit and loss account. Directly we'll move towards the debit side and we'll write advertisement, that is 1,200. Now what we need to do, we need to do the total of both the sides. डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट साइड का टोटल करो एंड ऑब्जर्व द टोटल. ठीक है, तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है किससे, क्रेडिट साइड से, एंड द टोटल इज 10,800. अब जो टोटल ज्यादा रहता ना वो हम दोनों तरफ लिख देते. एंड फ्रॉम दिस 10,800 वी नीड टू सबट्रैक्ट द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. अब जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आता, नेट लॉस. कई को लॉस, कई को डेबिट साइड हम पूरे एक्सपेंडिचर्स लिखे और क्रेडिट साइड हम पूरे इनकम लिखे. तो एक्सपेंडिचर का जो टोटल आ रहा वो ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ, इनकम कम हुई, तो डायरेक्टली दिस इज लॉस, नेट लॉस. सो फ्रॉम दिस 10,800 वी नीड टू सबट्रैक्ट द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. सो द वैल्यू ऑफ नेट लॉस विल बी 8,100 एंड दिस नेट लॉस मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. तो directly we'll go to the balance sheet liability side and the first item of liability will be capital. अब कैपिटल पे दो एडजस्टमेंट है. द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज नेट लॉस जो कि हमको माइनस करना है एंड द सेकेंड एडजस्टमेंट इज ड्रॉइंग्स 1,000, ये भी हमको माइनस करना है. सो डायरेक्टली we'll move towards the liability side and we'll write the amount of capital in the inner column, that is 30,000. and from this 30,000 we need to subtract net loss, that is 8,100. तो ये एक्चुअल वैल्यू कितनी बचती, नेट लॉस माइनस करे बाद 21,900. एंड फ्रॉम दिस 21,900 we need to subtract
द वैल्यू ऑफ ड्रॉइंग्स दैट इज 1000. अब जब हम 1000 इसमें से माइनस कर देंगे तो कैपिटल की प्रेजेंट वैल्यू मालूम हो जाती है, दैट इज 20,900. Now we are done with all the adjustments of capital. Now let us search for liabilities on the credit side of trial balance. Sales is our income, capital हम already mention कर लिए, bills payable is our liability, interest received is our income, bank loan is our liability. तो दो liabilities है. Number one is bills payable. We'll move towards the liability side and we'll write bills payable, that is 3,000. Then after that, the next liability is bank loan, that is 5,000. Done. We have covered all the liabilities. Now we'll begin with the asset side. अब asset को search करना है. We'll search on the debit side of trial balance. Trial balance के debit side में देखिए, the first asset is debtor, that is 10,000. The second asset is machinery, that is 9,500. The third asset is furniture, that is 6,400. And the last asset is closing stock, that is below the trial balance. So let us write all the asset on the asset side. The first asset is debtors, 10,000, and the next asset is machinery, that is 9,500, and the next asset is furniture, that is 6,400, and the last asset is closing stock, that is 3,000. Everything is done. Now we need to do the total of liabilities and the total of asset. अगर ये टोटल दोनों के बराबर है तो our balance sheet is tallied. Now let us find the total. तो जब हम टोटल करेंगे, the total of liabilities will be 28,900 and the total of asset will be 28,900. Done. Now let us verify our rule. हमारा rule क्या है? The rule for adjustment is every item of adjustment must appear twice. Adjustment का हर item दो बार दिखना. Closing stock एक बार हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बताया और दूसरी बार बैलेंस शीट एसेट साइड लास्ट आइटम बताया, राइट? एंड व्हाट इज द रूल फॉर ट्रायल बैलेंस? एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट अपीयर ओनली वंस. तो ट्रायल बैलेंस का हर आइटम एक बार दिखा. फ्रॉम दिस we have completed the 15th problem of final account. In the next video we are going to deal with all the adjustments of final account. Thank you. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.